गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2022 की उसको इनाग्रेट किया है टेरी के जो है ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में कह सकते हैं दिल्ली में। तो अब ये समिट क्या है, ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है टेरी का। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और ये ऐसा अकेला समिट है जिसमें ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन की जाती है और जिसमें डेवलपिंग वर्ल्ड भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्लोबल लीडर्स और प्रैक्टिशनर्स आते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बातें की जाती हैं, डिस्कशंस की जाते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो है वो खोजने की कोशिश की जाती है ताकि ग्लोबल कम्युनिटी जो है इससे बेनिफिट ले सके। अब पहले 2001 में सबसे पहली बार दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था टेरी द्वारा। उसी को ही जो है अब ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहा जाता है। अब टेरी क्या है? टेरी एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है। तो जब ये 1974 में बना था तो इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और लेकिन इसको 2003 में रीनेम किया गया और उसका नाम कर दिया गया द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ये अलग अलग फील्ड्स में काम करता है, जैसे कि क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। तो डीएनटीज कौन है? डी नोटिफाइड नोमैडिक या सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। तो उनके लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक स्कीम निकाली है अगले 5 साल के लिए, जिसमें कि उनको कोचिंग दी जाएगी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी उन्हें, और उनको लाइवलीहुड फैसिलिटेट कराने की कोशिश की जाएगी। अब इसके अंदर जो है कैसे काम करेगी ये स्कीम? तो इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी उनको, ठीक है, कि वो घर बना सके, अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस कर सकें। और ये स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये फंड्स जो हैं इसको डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में, बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसको क्योंकि ये 4 कंपोनेंट्स हैं, तो इन चारों कंपोनेंट्स के लिए को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उनके हाउसेस के लिए जो है वो काम करेगी। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उनको लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा। फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में उनके लिए काम करेगी। तो ऐसे अलग अलग जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इस फील्ड में, इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट में भी अनाउंस किया गया था इसके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया में पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है जिसको आप कह सकते हो कि इंडिया में एक है लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आया है जिसका नाम हिंदी में है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसमें जो लोग चाहे वो स्कूल से बाहर भी निकल गए हों, कितनी भी एज के हों, तो उनको अगर वो इलिटरेट रह गए हैं, नॉन लिटरेट हैं, तो उनको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। उनको उनकी सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी ही नहीं, बल्कि क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, फिर वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन और हॉलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर फोकस रखा जाएगा। तो जो है सिर्फ ये आपके बच्चों के लिए ही नहीं है, लिटरेसी के लिए, लिटरेसी बच्चों के लिए ही नहीं है, जो इवन बड़ी एज के हैं, जो इवन बूढ़े भी हैं, उन तक को भी टारगेट इसमें किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 15 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी में, उन सबको जो है वो इसमें कवर किया जाएगा अगर वो नॉन लिटरेट हैं। तो टारगेट ये है कि 5 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में, मतलब 1 करोड़ पर ईयर जो है लोगों को लिटरेसी दी जाए। और इस स्कीम के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 700 करोड़ रुपीज़ देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है 337 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाएंगे। अब स्कूल जो है वो यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब स्कूल में ही वो जो है लिटरेसी दी जाएगी उनको। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग भी की जाएगी कि स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सीएसआर फंडिंग भी इसमें यूज़ की जाएगी, उस फंडिंग का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में स्कूल्स की या इन लोगों की। अब ये वॉलंटियर बेसिस पर है, जो लोग सिर्फ नॉन नॉन लिटरेट हैं और वो अपनी लिटरेसी लेना चाहते हैं, किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है इसमें। अगर किसी को लगता है कि वो लिटरेसी उसके पास नहीं है, तो वो खुद वॉलंटियर कर सकता है कि हाँ मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ। फोकस ये रखा जा रहा है, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी कि 15 से 35 साल के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी अभी आने वाले जो आगे लाइफ पड़ी है, उनको अपना जो है लाइवलीहुड कमाने हैं। तो जो यंग को खासकर फोकस रखा जाएगा। दूसरा, फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नीति आयोग के, वहाँ पर फोकस रखा जाएगा। फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर 60% से कम फीमेल लिटरेसी है एज पर 2011 सेंसस, वहाँ पर भी ये फोकस रहेगा।
स्कीम का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें अब कहा है कि एडल्ट एजुकेशन, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, उसको रिप्लेस करके अब गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो यूज़ किया करेगी। क्योंकि एडल्ट एजुकेशन में क्योंकि कहा जाता है कि वो जो है 15 साल से ऊपर के ग्रुप को कवर करने के लिए अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, तो इसलिए उसको अब जो है ये शब्द क्या यूज़ किया जाएगा, एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पब्लिक ऑर्डर। तो कर्नाटका हाई कोर्ट जो है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का जो कंटेंशन है, जो उनका आर्गुमेंट है कि हमने हिजाब जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसलिए बैन किया है क्योंकि पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा था, तो उसको जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो हेयर कर रहा है। तो अब पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर तीन, वन ऑफ द थ्री ग्राउंड्स है जिस पे आप हमारी गवर्नमेंट है या फिर हमारी स्टेट कह सकते हैं इसको। तो स्टेट जो है वो हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। वैसे हमारे को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें से एक है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पब्लिक ऑर्डर के कंटेक्स्ट में लग सकती हैं। तो पब्लिक ऑर्डर है क्या, ये क्या शब्द का मीनिंग क्या है? जनरली जनरल टर्म्स में कहें तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब है पब्लिक पीस और सेफ्टी। तो अब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके बारे में एक बार डिस्कशन किया था, इसके बारे में जो है वो टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स जजमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है इसके कंटेक्स्ट में वो है राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर का ये मतलब है असले में कि कम्युनिटी जो है पब्लिक या फिर पब्लिक जो है वो एट लार्ज अफेक्ट हो रही हो अगर किसी एक्शन से, तो उसको जो हम पब्लिक ऑर्डर को कह सकते हैं, ठीक है। तो अब पब्लिक ऑर्डर में भी तीन उन्होंने क्राइटेरिया बताए कि सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो वायलेट हो रहा है तो पब्लिक ऑर्डर, इसका मतलब पब्लिक ऑर्डर खतरे में है। दूसरा उन्होंने बोला पब्लिक ऑर्डर इटसेल्फ, मतलब कि आपकी जो पब्लिक की पीस और सेफ्टी वो उनको पब्लिक को नुकसान ना हो, तो ऐसा कोई एक्शन जो है वो अलाउड नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आती है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट की या हमारे इंडियन स्टेट की सिक्योरिटी, वो थर्ड नंबर पर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ द लैंड, लॉ नहीं टूटना चाहिए। दूसरा है लोगों की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। तीसरा क्या है? सरकार या जो है स्टेट, इंडियन स्टेट खतरे में नहीं आनी चाहिए। तो ये पब्लिक ऑर्डर को उन्होंने तीन प्रायोरिटीज़ में बताया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उन्होंने नवंबर 2021 में एनआईए के तर्ज पर एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अब जो है वो बनाई थी। अब ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी एनआईए और अदर सेंट्रल एजेंसीज के साथ ऐसे केसेस में जिनमें जो कि टेररिज्म से रिलेटेड हैं। अब ये एक्चुअली जो है ये एजेंसी सीआईडी से अलग है, स्टेट की सीआईडी से अलग है, लेकिन जो सीआईडी विंग के जो हेड होते हैं वही इस एजेंसी के भी एक्स ऑफिशियल डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब इसकी क्यों ज़रूरत थी, अलग से बनाने की क्यों ज़रूरत थी? तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट जो है या यूटी इस केस में हम कह सकते हैं, तो यूटी जो है वो एनआईए को रेफर नहीं करता, तो उन केसेस की उन टेररिज्म से रिलेटेड केसेस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन ये स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, ठीक है। अब जो है कैसे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है? तो अब जो डीजीपी हैं जेएंडके के, वो आपकी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कंसल्ट करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर केस जो है इसमें कोई टेरर एंगल है, और अगर टेरर एंगल है तो क्या एसआईए जो है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत से केसेस आते हैं जिसमें हमको कई बार ऐसा टेरर का एंगल मिल जाता है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई नॉर्मल क्राइम से रिलेटेड हो, उसमें भी कोई ना कोई हमको टेरर लिंक मिल जाता है। तो उस केस में जो है जो डीजीपी होंगे स्टेट के, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं एसआईए को कि क्या इसको आप जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंडेट क्या है इसका? तो होम डिपार्टमेंट ने जब एसआईए को बनाया तो उसको उनको एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की जिम्मेदारी दी, और बहुत सी उनकी ब्रॉड मैंडेट है। आप देख सकते हो किडनैपिंग और मर्डर चार्जेस, उसमें भी किडनैपिंग और मर्डर भी कई बार टेररिज्म से रिलेटेड होता है, कोई लार्ज कॉन्स्पिरेसी होती है उसके पीछे। फिर जो एनडीपीएस, जो ड्रग्स से रिलेटेड केस हैं, फेक करेंसी के जो केसेस हैं, उनमें भी अगर टेररिज्म का केस कोई टेररिज्म का कोई लिंक दिखता है तो उस केस में भी एसआईए जो है वो सामने आ सकता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में आप जम्मू एंड कश्मीर में तो आप किसी ना किसी केस में जो है वो निकाल ही सकते हो टेररिज्म का लिंक। तो ये एसआईए का जो मैंडेट है वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ब्रॉड हो गया है, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्वामित्व स्कीम। तो इंडिया जो है वो ये प्रिपेयर कर रहा है कि डिजिटल मैप्स बना दिए जाएँ अगले जो है 6 लाख विलेजेस के, और एक पैन इंडिया 3D मैप्स बनाकर उनको 100 सिटीज़ के लिए जो है वो बनाया जाए, ठीक है। अब ये स्वामित्व है क्या? स्वामित्व जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, जिसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जा रहा है ऐसे विलेज हाउस होल्ड ओनर्स को जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे। तो इनिशियली तो ये सिर्फ 6 स्टेट्स में लागू की जा रही थी, ठीक है, लेकिन इसको धीरे 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 अगले कुछ सालों में जो है, अब ये पायलट स्कीम चल रही है, लेकिन इसको अगले कुछ सालों में जो है वो पूरे इंडिया में सारे रूरल एरियाज़ को कवर किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो विलेज हाउस होल्ड ओनर्स हैं उनको उनके प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं। मतलब उससे क्या होगा, एक तो अगर आपके विलेज जो हाउस होल्ड ओनर्स हैं उनको अगर जब प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे उनके, तो वो बैंक क्रेडिट ले सकते हैं, उनके पास कंक्लूसिव टाइटलिंग हो जाएगी कि हाँ ये हमारा घर है, उसके ऊपर उनको बैंक लोन मिल सकता है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो अब ये स्वामित्व स्कीम जो है इसके थ्रू जब मैपिंग करेंगे, ड्रोन के थ्रू सर्वे किया जाएगा, और जो है सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हेल्प करेगा ये मैप बनाने में, कि तो उससे पता लग जाएगा कि जो है घर किसका है, हाउस होल्ड्स जो है उसकी पूरी मैपिंग जो है विलेजेस की जा सकेगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is World Sustainable Development Summit. So PM Modi has recently inaugurated the World Sustainable Development Summit, which has been organized by the Energy Resources Institute of New Delhi. Okay, so this summit is basically the only summit which talks about global issues, and it takes place in the developing world. And otherwise, you know that either the United Nations is conducting such summits, or the developed world, the US, France, UK, all these countries are conducting such summits. But it is the first summit which is conducted by a developing country like India, and it is a platform for global leaders and practitioners to participate and discuss over the climatic issues of universal importance. Okay, so it aims to provide long-term solutions for the benefit of whole community or global community, and it started as the Delhi Sustainable Development Summit of 2001, and later on it was transformed into the World Sustainable Development Summit. So what is TERI? So TERI is basically a non-profit research institution, and it works in the field of energy, environment, and sustainable development. It was established in 1974 as the Tata Energy Research Institute, but it was later on renamed as the Energy and Resources Institute in the year 2003. So it works at the local and national level, of course, and it helps India in shaping global solutions to critical issues. It works in the field of energy, environment, and sustainable development, and its focus lies in promoting clean energy, pollution management, water management, climate resilience, and even sustainable agriculture. Okay, let us see the next topic, which is Scheme for Economic Empowerment of DNT. So DNTs are the Notified Nomadic and Semi-Nomadic Communities. So for them, this Social Justice and Empowerment Ministry has come up with a scheme. It is known as Scheme for Economic Empowerment of DNTs. So it is also known as the SEED scheme. So it has four components. The first one is giving them good quality coaching for enabling them to appear in competitive examinations, and to provide them with health insurance, facilitating their livelihoods, and giving them financial assistance for the construction of houses. So it is initially envisioned for for a period of 5 years, and of course, if needed, it will be extended by the government after a review or after periodic reviews. So the funds will be transferred directly to the beneficiaries in their accounts, and the scheme will be implemented through a portal which will be developed by Department of Social Justice and Empowerment. And because this has four components, which are the healthcare, housing, and livelihood. So there are three or more agencies which will be participating in it to implement this scheme. That is the Ministry of Rural Development, National Rural Livelihoods Mission, and the National Health Authority. Okay, so now let us see the next topic, which is New India Literacy Program. So this is a very impressive scheme by the government, in which it is providing opportunities for all those people who have fallen woefully short in getting literacy. So they are basically non-literate people. So for whatever reason they have failed to gain literacy, so for them the government is providing them with an opportunity to get literacy. So this is also known as the Nav Bharat Saksharta Karyakram. Of course, it was announced in the budget this year.
and I'm sorry, last year budget, and that's why it is also a part of the national education policy. Okay, so apart from just the foundational level literacy and numeracy, which we also talked about in the Nipun Bharat scheme, this scheme also wants to give them critical life skills like digital literacy, financial literacy, commercial skills, healthcare, etc. And apart from that, vocational skills will also be provided to them, and of course the basic education would also be covered. So it is uh, the scheme will not be mandatory, of course. Only it will be a voluntary scheme. So those who are not literate and they want to get literacy to change their lives, they can volunteer and through an online application, and they can get this literacy at any school. Okay. So eligibility criteria is anyone who is not literate, and the person is above the age of 15 or 15 and the person is of the age of 15 years and above in any state of India and UT, then that person would be eligible for applying. And the aim is to at least cover about 5 crore learners. That is about 1 crore learner per year, because the scheme is for 5 years initially. And for that, the central government will be providing the states with 700 crore rupees, and the states would share the 337 crore rupees budget. Okay, so what are the salient features of the scheme? Of course, the scheme will be implemented by the schools, and this will the education on and these literacy programs will be conducted at schools, and there will be extensive use of technology. Even performance grading index will be done at the state, yeah, or UT or district level. CSR funding or CSR support, that is the corporate social responsibility or philanthropic support, would also be welcomed, so as to uh, enhance our ICT support, or the information and communication technology support, or use of technology basically. There will also be a priority group. Okay, so the government wants to focus upon those who are actually between the age of 15 and 35 years, because they have to get livelihoods for themselves and their family. So that's why this will be the focus age group. And of course, there will be there will be certain criteria like location based criteria. So aspirational districts which are considered which were earlier considered backward, so they will also be focused upon, so that literacy can be imparted in such districts. And of course, those districts have also been identified where there is a female literacy rate of less than 60% as per the 2011 census. They will also be focused upon under this scheme. So several ministries and departments will be converged under this scheme, so as to ensure effective implementation of this NILP. So there is also another change, a very impressive change. So the government is changing adult education, that is the Praud Shiksha, with the education for all terminology. Okay, so why this education for all? So it would wouldn't have been appropriate uh, to incorporate all non-literates who are 15 years and above age group in the adult education criteria. Okay, so that's why we are now using the education for all, okay, in this NILP scheme. So now let us the next topic, which is public order. So Karnataka High Court is hearing a petition which is basically a challenge to the constitutionality of the Karnataka government's ban on students wearing a hijab in educational institutions. So do you know that Karnataka government has said that it has basically justified the ban on the ground that it is violating the public order. So what is public order? So public order is one of the three grounds on which the state can restrict freedom of religion. It can also restrict freedom of speech and other fundamental rights based upon this criteria. So you know that Article 25 of the Constitution provides us with guarantees to with respect to right to freedom and conscience. But there is of course this public order exception. So what is public order? In general terminology, we equate it with public peace and safety. Okay, but while hearing the Ram Manohar Lohia versus State of Bihar case, the Supreme Court came up with a better definition. It came up with a criteria that public order is basically any particular action which affects the community or public at large. Okay, so it gave a priority list to identify public order. So the first one is
any action, if it is violating the law and order, then the any action should not be violating the law and order. Okay, so the law of the land is supreme. It should not be violating it. If it violates it, then we would be considering it as the threat to public order. The second priority is to the public order itself. Okay, so public safety, if it is being harmed, or public peace is being harmed, then also it is a challenge to public order. The last criteria is the security of state. So the Indian state must not be harmed. This comes at the third level of priority, as per the Supreme Court's definition. Okay, so the first thing is, if I am doing an action, if I am performing an action, or I am behaving in a certain manner, if I am breaking the law, then of course this public order thing would apply to me. Okay, and if I am not breaking a law, if I am conducting something but it is harming the public at large, and it is harming the safety of the public at large, then also the second criteria would apply upon me, and it would be considered as the threat to public order. Okay, so even now, if I am doing something, it is not against the law, and it is not even jeopardizing the lives of people, but I am threatening the security of the state through my action, in that case also the public order argument would apply. Okay, so this is the definition of Supreme Court under the Ram Manohar Lohia versus the state of Bihar case. So now let us see the next topic, which is state investigating agency. So on the lines of national investigation agency, the Jammu and Kashmir government had already established this state investigating agency in November 2021. So what is this agency? So this is basically an agency which will coordinate with NIA and other central agencies to take measures for the speedy and effective investigation and prosecution of terrorism related cases. Okay, so the need for creating a separate agency was felt in Jammu and Kashmir, because not all cases, of course, could have been handed over to the NIA, and those cases which were not referred to the NIA would be investigated by this SIA. So this SIA directorate has been set up in J&K, and the head of CID wing will act as the ex officio director of SIA. Okay, so any case that the police is investigating in J&K, and if it found that there is a terror link to that case, in that particular instance, the DGP of Jammu and Kashmir would consult the SIA, and it would with this consultation they would find out if the case is fit to be investigated by SIA. Okay, so the Home Department of Jammu and Kashmir has given it a very broad mandate. So the Explosive Substances Act and the Unlawful Activities Prevention Act will be, of course, investigated by this SIA, and any other act or any other crime. Let's say there is a kidnapping, but the police finds a terror link to it. In that case, also SIA can intervene. Even similarly, an act of fake currency, fake Indian currency, or drugs case, or any larger conspiracy, in any case in which a larger conspiracy is being felt by the police, in that case the SIA can enter into that. Okay, so there will be a very wide mandate to SIA in the UT of Jammu and Kashmir. Okay, so now let us see the next topic, which is Swamitwa scheme. So India is planning to prepare digital maps of all the 6 lakh villages, which will be mapped by the Swamitwa scheme. So it will also be preparing the Pan India 3D maps of which will be prepared for 100 cities. And this what is this Swamitwa scheme? So the data is being collected through this Swamitwa scheme. It's a central sector scheme of the Ministry of Panchayati Raj. Of course, it was announced in 2020. Initially, it was to be implemented only in 6 states, but of course, after this pilot project would be completed, it will be rolled out at the national level. Okay, so it is basically aiming to provide the record of rights, or the titular rights of to the village household owners in rural areas, and they will be issued property cards. Okay, they will also be issued the physical property cards, and as well as they would also be facilitated to uh, facilitated with digital property cards. Okay, so this will continue for over a period of 4 years, and it will eventually cover around 6.62 lakh villages of the country. Initially only 6 states were being covered under the pilot phase, but later on, of course, all the states would be covered under this scheme, and the Survey of India would help these states to for drone surveys of the rural areas. So why is it
how this scheme would be beneficial for the people who residing in the rural areas. So once they get the property cards, they would be able to access bank credit, and there would be a virtual elimination of property disputes in the rural areas. Okay, so this is the Swamitwa scheme, and based upon the data which is being collected under this scheme, the government is going to prepare a digital map of all the 6 lakh villages in the country. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.